अब हमको आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हमको याद रखना है दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एट दैट टाइम राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट was a fundamental right under Article 31. Under Article 31. लेकिन at present it is not a fundamental right. At present it is a legal right under Article 300A. Under Article 300A. But ऐसा क्यों हुआ? Why right to property is no longer a fundamental right? अब इसकी हिस्ट्री हम एग्जामिन करते हैं। Right after independence, Bihar tried to the state of Bihar tried to acquire lands of the rajas of that time. अब इंडिपेंडेंस के बाद कोई राजा ऐसा था नहीं, सारा लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में था। लेकिन स्टिल जो इंडिपेंडेंस से पहले राजास थे, इनकी प्रॉपर्टी इनसे छीनी नहीं गई थी। देयर प्रॉपर्टी रिमेन्ड विद देम, बट द स्टेट ऑफ बिहार वांटेड टू एक्वायर लैंड्स ऑफ दीज राजास, एंड इसके लिए उन्होंने एक ऑर्डर को पास किया। But this order was declared to be unconstitutional. This order was declared to be unconstitutional in the case of Kameshwar versus State of Bihar. Supreme Court held that Article 31 is there, which guarantees right to property, and it is a fundamental right. Right to property is a fundamental right under Article 31, and that is why this order is unconstitutional. अब इसके बाद वेरियस सीएम्स, काफी सारे चीफ मिनिस्टर्स पंडित नेहरू के पास गए एंड दे आस्क्ड हिम टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अलाउ एक्वायरिंग ऑफ लैंड। अब इसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच आर्टिकल 31A was added to the Indian Constitution. And this amendment was given retrospective effect from 26 January 1950. अब इस आर्टिकल 31A की वजह से सारे स्टेट जो हैं दे कैन एक्वायर लैंड्स, एंड हमको पता होना चाहिए दैट दिस फर्स्ट अमेंडमेंट was put in the ninth schedule. अब नाइन्थ शेड्यूल की कहानी क्या है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फॉर दिस वी विल हैव टू रेफर आर्टिकल 31B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे गिवन है कि कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लॉ अगर आप नाइन्थ शेड्यूल में डालते हो तो इस लॉ का जुडिशियल रिव्यू इज नॉट पॉसिबल। ओवरऑल 284 अमेंडमेंट्स वर पुट इन द नाइन्थ शेड्यूल ताकि इन अमेंडमेंट्स का जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। पर लेटर ऑन इन द केस ऑफ आर कोहेल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, in this particular case, Supreme Court held that ninth schedule is subject to judicial review if it violates the basic structure of Indian Constitution. हम already देख चुके हैं that in the case of केशवानंद भारती, this doctrine of basic structure was given. अब हमने 31A और 31B की हिस्ट्री को देख लिया है। Now we will move towards Article 31C. इसको enact कैसे किया गया था। अब हमको पता है that the Indira Gandhi government attempted to do bank nationalization. Here banks with holdings over 50 crore were acquired by the government. Of this bank nationalization was challenged in the case of R.C. Cooper versus Union of India. अब in this particular case, Supreme Court held that bank nationalization is unconstitutional. Supreme Court also said that directive state principles cannot override fundamental rights. Directive state principles are under Part 4 of Indian Constitution. Now to overturn the judgment of the Supreme Court in the R.C. Cooper case, the Parliament passed the 25th Amendment. 25th Amendment was passed by the Parliament, and by this 25th Amendment, Article 31C was added to the Indian Constitution. Now, Article 31C was further amended by the 42nd Amendment. अब Article 31C बोलता है that certain directive state principles like Article 39B
and Article 39C will have primacy over fundamental rights. अब इन आर्टिकल्स में बोला हुआ है that the state shall thrive for equitable distribution of resources and efforts must be made to avert the accumulation of wealth. Up in the case of Keshwanand Bharati judgment, 25th Amendment was held to be constitutional. 25th Amendment was held to be constitutional. But इसके बाद Parliament brought the 42nd Amendment, जिसमें ये चीज बोली गई थी that all the directive state principles will be given primacy over fundamental rights. अब हमको याद रखना है that this part of 42nd Amendment was held to be unconstitutional in the case of Minerva Mills versus यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे पूरे 42nd अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन सिर्फ इस पार्ट को जहाँ पे लिखा हुआ था कि डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स को हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्राइमेसी देंगे, सिर्फ इस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है. एंड इस केस में भी बोला गया था that the changes that were made in Article 31C by the 42nd Amendment are unconstitutional. But Article 31C, as originally introduced by the 25th Amendment, was held to be valid. यानी जो ओरिजिनल 31C था उसको वैलिड किया गया था, लेकिन जो चेंजेस 31C में लाए गए थे by the 42nd Amendment, these changes were held to be unconstitutional. अब इस केस में कोर्ट ने बोला था that there should be harmonious relation between fundamental rights and directive state principles. You can write this that Supreme Court held that Indian Constitution is formed on the bedrock of fundamental rights and directive state principles. इसके बाद कोर्ट ने बोला था that they are together responsible for social development of the country, and none of them is less than the other. इसके बाद कोर्ट ने बोला था that to give absolute primacy to one over the other will disturb the harmony between the two, which is essential feature of Indian Constitution. इसके बाद कोर्ट ने बोला था that the goals of the directive state principles have to be achieved without the abrogation of fundamental rights. एंड इसके बाद कोर्ट ने बोला था that DSP and fundamental rights are meant to supplement each other. यानी यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि हम ये नहीं बोल सकते हैं that DSP will be over fundamental rights. They both are necessary for society's evolution. लेकिन हमको ये चीज भी याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स को आप जाके कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो. आगे जाके हम आर्टिकल 32 देखेंगे, वहां पे यू विल सी दैट if your fundamental rights are breached, then you can approach the Supreme Court under Article 32. लेकिन डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है. अगर डीएसपी का वायलेशन होता है then you cannot approach the courts for their violation. उनके वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते. So we will have to remember these cases and these concepts.